अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS 2023 पेपर के सॉल्यूशन। अब कौन से पेपर का है? वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। ठीक है, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वेदर इट्स प्रेसी, कंप्रिहेंशन, करेक्शन, पंचुएशन, प्रपोजिशन, एडियम्स और ट्रांसलेशन। सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है पेपर। पेपर इसमें नहीं होगा। पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? वो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप जाके जितने भी अब तक वीडियोस पास पेपर हम कर चुके हैं वो सारे वहाँ पे पेपर्स अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो प्रेसी मैंने कर दिया, रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। The author highlights the three prevalent perspectives on freedom in education. The first group advocates complete freedom for children, regardless of their behavior. The second group believes in absolute authority, regardless of the child's behavior. However, the third group believes in freedom, but with the expectation of moral perfection, which is not supported by observations of animals and babies. He argues that education from a social perspective should provide opportunities for growth and development, which cannot be achieved solely by children on their own. He disagrees with the third group, which is too individualistic and neglects the importance of knowledge. Title: Schools of Thought on Freedom in Education. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, हाउ इम्पोर्टेंट इज हैप्पीनेस टू मोस्ट पीपल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियल वेल्थ एंड हैप्पीनेस? So, the majority of people have always lived simply, and most still do today. And in affluent, industrialized countries, people have more goods and services than necessary to survive. But they are not necessarily the happiest people, according to the 2012 Happy Planet Index HPI. The relationship between material wealth and happiness is not clear yet. Okay, question number 2 was, how does the author characterize the concept of voluntary simplicity as a movement and as a philosophy? So, the answer is, the author characterizes the concept of voluntary simplicity as a movement and a philosophy that seeks to reduce the consumption of goods and energy and minimize personal environmental impact while also enriching life in a deeper spiritual sense. The author also notes that simplicity is not to be confused with poverty, does not mean rejecting progress or technology, and requires finding a balance between wants and needs. Additionally, the author notes that voluntary simplicity is a flexible philosophy and depends on individual character, cultural background, and climate. ठीक है, उसके बाद है, what impact is feared by the growing consumerism of modern society? The growing consumerism of modern society is feared to have environmental consequences. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, what influences make it difficult for people to reduce their consumption patterns? People are influenced by advertising that bombards them with messages that they need certain products to be successful, desirable, and important, making it difficult for them to differentiate between wants and needs and resist what they don't need. And the last question is, what are the challenges and rewards of voluntary simplicity? Answer is, the challenges of voluntary simplicity include ongoing struggles to resist unnecessary consumption and establish a healthy balance between wants and needs. The rewards include conserving resources, reducing expenses, fostering a sense of community, and reducing stress, leading to a better quality of life. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो था, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन मैंने सबकी करेक्शन दे दी है।
रीड कर देती हूँ. His knowledge, पहला, his knowledge of languages and international relations aids him in his work. Second one is, the ambassador with his family and staff invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. Third is, this year he will sit for the CSS examination. Fourth one is, the chief executive will let us know whether he can attend the meeting. Fifth one is, if some of you make a noise, you shall be punished. Sixth one is, when he came back from vacation, Aslam and I planned to look for another apartment. Seventh one is, he came to me to inquire about the salary attached to the appointment. And the last one is, I am too tired to hunt for words and idioms in my English book. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है, ये पंक्चुएशन के क्वेश्चन था. ठीक है. क्वेश्चन में ऑफ कोर्स यही कहा गया था कि क्वेश्चन हमारे पास था, पंचुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट व्हेन नेसेसरी. तो पंचुएट कर दिया मैंने, रीड कर देती हूँ. While taking a nap on the porch one hot summer day, comma, Hoja dreamed that a stranger promised to give him 10 pieces of gold. Full stop. The stranger placed them in Hoja's, यहाँ पे apostrophe s है, hand one by one until he reached the 10th piece, comma, which he hesitated to give him. Full stop. Then quotation marks, come on, comma, what are you waiting for? Question mark and quotation mark. Said Hoja, full stop. Quotation mark, you promised me 10. Then quotation mark, then full stop. Just then, comma, he woke up, full stop. He immediately looked at his hand and saw that it was empty, full stop. He quickly shut his eyes again, comma, stretched out his hand, comma, and said, comma, then quotation marks, all right, comma, I will, यहाँ पे I के बाद apostrophe double L, settle for 9, फुल स्टॉप एंड कोटेशन मार्क. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बी की बात करें तो वो था, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. तो मैंने सबकी ही दे दी है, रीड कर देती हूँ. The neighbors came to my house to see what's going on in the house. Second is, she sat in the shade of tree. Third one is, the moon does not shine by its own light. Fourth one is, the burglar jumped over the compound wall. Fifth one is, she entered into an agreement with them. Sixth one is, I have been working hard on arithmetic. Seventh one is, he got on his bicycle. And last one is, it cannot be done without offense. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो था, यूज ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग्स. पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 5 की बजाय मैंने सबके दे दिए मीनिंग्स भी और सेंटेंसेस भी. रीड कर देती हूँ. पहला है एंटीक एंड एंटीक. जो ANTIC एंटीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज या फनी मूवमेंट. सो for example, the children were making antique gestures to make their friends laugh. और एंटीक ANTIQUE, इसका मीनिंग होता है एंशियंट या ओल्ड. द एंटीक was handed down from her great grandmother. सेकेंड है ड्रॉट एंड ड्रॉट. जो DRAUGHT ड्रॉट है, इसका मतलब होता है ब्रीज. I felt a cold draught coming from the window. और जो DROUGHT है, उसका मतलब होता है lack of rain या abnormally dry weather. The drought has caused a shortage of water in the region. उसके बाद है quaint या queer. Quaint का मतलब होता है strange या odd. The quaint cottage was surrounded by a beautiful garden. और उसके बाद queer का मतलब होता है strange या unusual. The behavior of the stranger was queer and made everyone suspicious. उसके बाद momentary या momentous. Momentary का मतलब होता है brief. The momentary power outage caused the computer to shut down. और momentous होता है important. The momentous occasion was celebrated with great joy and excitement. उसके बाद है eminent या imminent.
एमिनेंट का मतलब होता है EMINENT का, फेमस या रिनॉन्ड. द एमिनेंट साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिसर्च. और इमिनेंट IMMINENT का मतलब होता है फोर्थ कमिंग या विच इज अबाउट टू हैपन. सो द कंपनी इज फेसिंग एन इमिनेंट फाइनेंशियल क्राइसिस. उसके बाद इमिग्रेंट या एमिग्रांट. इमिग्रांट का मतलब होता है IMMIGRANT का, one who settles in a new country. The immigrant family was looking for a better life in a new country. और दूसरा immigrant EMIGRANT का होता है one who leaves one's own country to settle in another. The immigrant had to leave his home country due to political turmoil. उसके बाद कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट जो CUMPLIMENT है, इसका मतलब होता है वर्ड ऑफ प्रेज फॉर समवन. ही कम्प्लीमेंटेड एरिसा ऑन हर अपीयरेंस. और कम्प्लीमेंट जो कि COMPLEMENT है, इसका मतलब होता है कंप्लीट या मेक परफेक्ट. द नेकलेस कम्प्लीमेंटेड हर ड्रेस. उसके बाद फेंट या फेंट, FAINT, फेंट का मतलब होता है वीक या टिमिड. शी फेल्ट अ फेंट हार्ट बीट. और feint, FEINT का मतलब होता है डिसेप्शन. द बॉक्सर मेड अ feint टू कंफ्यूज हिज ओपोनेंट. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है, ये था ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू हिज बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस. तो ट्रांसलेशन आपके सामने है, रीड कर देती हूँ. द ओल्ड मैन सेड that there is a mountain across the forest where the flower grows, whose fragrance returns the lost vision of the eyes, but the mountain is very high, and there are many rocks on it. There are thorny bushes and large stones that block the way. Many people came and went to go to this mountain, but no one came who reached the flower. Perhaps that is why there is sorrow and pain in the world, and man is in search of light. And that's it. यहाँ तक 2023 के पेपर का सारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है. आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी. स्टिल अगर नहीं होती हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा फॉर श्योर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.